हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी एग्जाम में। दोस्तों आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स के नाम। दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। फ्रेंड्स ये स्टैटिक जीके आप लोग के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगी। फ्रेंड्स ये बुक्स एंड ऑथर्स के आप लोग के पास मतलब कि पूछे जाते हैं बहुत ही ज्यादा हर जगह, मतलब कि हर एक एग्जाम में इस क्वेश्चंस के बारे में पूछा जाता है। कम से कम आपके पास एक से दो क्वेश्चन आपके ये हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि जैसे कि मैं आपको जो अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पिछले साल हर एग्जाम्स में मोस्टली ज्यादातर एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं। सो फ्रेंड्स इन बुक्स एंड ऑथर्स को आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, आप लोग के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। जैसे कि RRBJE और अदर एग्जाम्स जितने भी आ रहे हैं, बैंक के एग्जाम्स होते हैं, इन सब में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड्स चलिए मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ आगे क्वेश्चंस, 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बुक्स एंड ऑथर्स के लिए। सो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आप लोग से ये बोलना चाहूंगा, जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। सो फ्रेंड्स चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं वीडियो के साथ। पहला क्वेश्चन, ऑथर ऑफ अराउंड द वर्ल्ड इन 8 days इज रिटन बाय whom? विलियम शेक्सपियर, रिचर्ड्स, यूएस नेपोल, जूल्स वर्नी। The correct answer is Jules Verne. Next question. The author of Business at Speed of Thought is Dick Farnes, Francis, John Gray, Bill Gates, or the David Baldacci. The correct answer is Bill Gates. Bill Gates has written the author of Business at Speed of Thought. Next question. Who among the following is the author of book India Remembered? Note that author of the book India Remembered: J.K. Rowling, Robert Dallek, Pamela Mountbatten, Stephen Hawking. The correct answer is Pamela Mountbatten. Pamela Mountbatten has written the book India Remembered. Question number 4. Who among the following wrote the poem Shube Azadi? Shahir Ludhianvi, Faiz Ahmad Faiz, Muhammad Iqbal, D. Maulana Abdul Kalam. The correct answer is Faiz Ahmad Faiz. The correct option is B. The poem Shubha Azadi was written by the Faiz Ahmad Faiz. Next question. Who wrote Devdas? Vibhuti Bhushan Bandyopadhyay, Sarat Chandra Chattopadhyay, C. Kalidasa, D. Surdas. The correct answer is answer B. Sarat Chandra Chattopadhyay has written the Devdas. फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। सो फ्रेंड्स इन चीज़ों को आप लोग अच्छे से रट लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चंस आप लोग बहुत महत्वपूर्ण हैं और ये फ्रेंड्स टॉप 30 क्वेश्चंस हैं जो कि हमेशा एग्जाम से पूछे जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन, हु सेड मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल? हु सेड मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल? सुक्राट्स, प्लेटो, डेंटी और एरिस्टोटल? द करेक्ट आंसर इज एरिस्टोटल. एरिस्टोटल हैज said that the man is a political animal. Panchatantra has been written by whom? Surdas, Kalidas, Vishnu Sharma, Vishakha Datta. The correct answer is C. Vishnu Sharma. Who among the following is a famous literary writer in English? Arun Shuri, K. A. Abbas, R. K. Lakshman, or the Kuldeep Nagar? The correct answer is K. A. Abbas. K. A. Abbas is the following famous literary writer in the English. Which of the following books is written by R.N.Tagore? Anand Math, Chidambara, Rakt Karabi, Durgesh Nandini. The correct answer is Rakt Karabi. The Rakt Karabi books is written by the R.N.Tagore. Who said child is the father of man? Lord Byron, William Wordsworth, Shakespeare, or the D. John Keats? The correct answer is William Wordsworth said that the child is the father of man. फ्रेंड्स ये वाले बुक के बारे में आप लोग अच्छे से रट लीजिएगा कि मतलब हु इज द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, इस वर्ड्स को किसने कहा है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसको कहा है। फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। सो फ्रेंड्स आप लोग इनको पूरा एकदम रट डालिए, आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहेगा। तो फ्रेंड्स चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन,
Who wrote the book Discovery of India? Who wrote the book Discovery of India? Vikram Seth, Rabindranath Tagore, Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru. The correct answer is Jawaharlal Nehru. Nehru written the book Discovery of India. Shishu is the literary work of which Indian author? Vikram Seth, Jawaharlal Nehru, Rabindranath Tagore, Arundhati Roy. The correct answer is Rabindranath Tagore. Okay, friends, let's move to the next question. Who among the following wrote the book Bahuviva? Bahuviva. Raja Ram Mohan Roy, Ishwar Chandra Vidyasagar, Pandita Rambai, or the D. Rabindranath Tagore? The correct answer is Ishwar Chandra Vidyasagar has written the book Bahuviva. Bahuviva. Sorry friends, pronunciation थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है. So friends, it's Bahuviva. Bahuviva. Next question, question number 14. The Musalman, the handwritten daily published from which one of the following places? Chennai, Hyderabad, Mysore, or Lucknow? The correct answer is Chennai. Next question. Who wrote the book The Story of Integration of Indian States? B.N. Rao, C. Rajgopalachari, Krishna Menon, V.P. Menon. The correct answer is V.P. Menon. Okay, friends. Let's move to the next question. The autobiography Living History has been authored by whom? Margaret Atwood, Benazir Bhutto, Hillary Clinton, or Monica Lewinsky? The correct answer is C. Hillary Clinton. Okay friends, हिलेरी क्लिंटन आप लोग इसके बारे में जानते ही होंगे. सो फ्रेंड्स चलिए आगे बढ़ते हैं. हु हैज रिटन, एक मिनट फ्रेंड्स, जो लोग फ्रेंड्स हिलेरी क्लिंटन के बारे में जो भी आप लोग जानते हैं इस चीज के बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए. ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि मतलब कि आप लोग हिलेरी क्लिंटन के बारे में क्या जानते हैं, हिलेरी क्लिंटन कौन थी. ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं. हु हैज रिटन शकुंतला? हु हैज रिटन शकुंतला? कालिदास, कबीर, तुलसीदास और नन? द करेक्ट आंसर इज A. Kalidas. Kali has written the book Shakuntala. Who has written Mother of India? फ्रेंड्स, आई होप ये क्वेश्चन सभी को ही पता होगा. कोई भी इस क्वेश्चन को अगर एग्जाम में आता तो कोई गलत करके नहीं आएगा. सो फ्रेंड्स, आप लोग इसके बारे में आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताइए कि मतलब कितने लोग ने इस क्वेश्चन को देखते ही उन्होंने आंसर अपने माइंड में सोच लिया था कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है. सो फ्रेंड्स, जो लोग सही सोच लिए हैं वो लोग कमेंट करके बताएं कि हाँ सर मैंने इस क्वेश्चन को सही सोच लिया है. मैं तो आंसर बताऊंगा ही. सो फ्रेंड्स चलिए आगे बढ़ते हैं. मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ. इसका सही आंसर है डी. कैथरीन मायो हैज रिटन द बुक मदर इंडिया. ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट. हु रोट द सॉन्ग ऑफ कहो ना प्यार है? इब्राहिम अश्क, महबूब, आनंद बख्शी और समीर? द करेक्ट आंसर इज इब्राहिम अश्क has written the song of Kaho Na Pyaar. Okay friends, Ibrahim Ashk has written the song Kaho Na Pyaar Hai. Next question. Who is the author of Hamlet? Who is the author of Hamlet? A. Christopher Marlowe, B. Geoffrey Chaucer, C. William Shakespeare, D. Edith Wharton? The correct answer is William Shakespeare is the author of Hamlet. Okay, next question. The song of Bande Mataram was originally composed in Assamese, Bengali, Hindi, or the Sanskrit? The correct answer is Sanskrit. In Sanskrit, the Bande Mataram has been originally composed. Okay, next question. My Life is the autobiography of APJ Abdul Kalam, Rajendra Prasad, Billion, sorry friends, Bill Clinton, or D. Hillary Clinton? The correct answer is Bill Clinton. Bill Clinton has written My Life is the autobiography of Bill Clinton. Okay friends, next question. The author of India Divided is Dr. Rajendra Prasad, V.V. Giri, F.A. Ahmed, or Jail Singh? The correct answer is A. Rajendra Prasad.
India Divided is written by Rajendra Prasad. Question number 24. Shakespeare character named Beatrice appears in which play? The Tempest, Othello, Much Ado About Nothing, A Midsummer Night's Dream. The correct answer is C. Much Ado About Nothing. Okay फ्रेंड्स नाम थोड़ा आप लोग के लिए यहाँ पे मुश्किल रहेगा, लेकिन ये आप लोग ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इन क्वेश्चंस को आप लोग एक तरह से आप लोग कहीं पे नोट कर लीजिए लिख लिख के, और इन क्वेश्चन को एक दो बार आप लोग दिन में प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि आप लोग जैसे एग्जाम आएगा फ्रेंड्स, जैसे कि उतना टाइम आपको मिलता नहीं है ज़्यादा बुक्स एंड ऑथर, आप सोचते हैं कि वो हम लोग कर ही लेंगे, बट आप लोग इन सब चीज़ों को फ्रेंड्स इग्नोर मत किया कीजिए। एक एक नंबर से ही आप लोगों का सिलेक्शन रुक जाता है, एक क्या फ्रेंड्स 0.5 नंबर से 0.25 नंबर से ऐसे सिलेक्शन रुकता है। सो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आप लोग को सिलेक्शन कराने में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। सो फ्रेंड्स इन क्वेश्चन को आप लोग हल्के में मत लीजिए और आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ नेम ऑफ द रोज? जॉन स्टेनबैक, विलियम शेक्सपियर, उम्बर्टो इको, J.K. Rowling. The correct answer is C. Umberto Eco. Okay. Next question. Who is the author of book Blue Star? Author of book Blue Star. K.S. Breyer, Prakash Singh Badal, K.P.S. Gill, or Gurucharan Singh Tohara. The correct answer is K.S. Brar. Option A. K.S. Brar is written the book Blue Star. Next, question number 27. The book Broken Wings was written by whom? Amrita Pritam, Sarojini Naidu, R.K. Narayan, or Maithili Sharan Gupta. The correct answer is B. Sarojini Naidu. Okay, the Broken Wings was written by the Sarojini Naidu. The correct answer is B. Next question. In which language did Jean-Paul Sartre write his books? A. Greek, B. French, C. Spanish, D. Russian. Correct answer is B. French. Next question. Who is the author of the book My Experiment with Truth? Winston Churchill, James Morris, Michael Anderson, D. Mahatma Gandhi. Correct answer is Mahatma Gandhi. Okay friends. Last question. The book Prison Diary was written by Jawaharlal Nehru, Morarji Desai, Jayaprakash Narayan, Atal Bihari Vajpayee. The correct answer is it's C. Jayaprakash Narayan. The book Prison Diary was written by Jayaprakash Narayan. So friends, thank you friends for watching this video. I hope ये वीडियो आपको पसंद आई होगी फ्रेंड्स, ये आप लोग के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहे हैं। सो फ्रेंड्स थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। और फ्रेंड्स हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं और वीडियो को लाइक जरूर करें। बाय बाय फ्रेंड्स।